Machephy Eduworld. Good evening, everyone. So last time हमने पढ़ा था work done by a force, and based on a single formula, we did a lot of numericals, and that single formula is work done is integration of F dot dr. And we have learned how to apply this mathematically. Now we are going to learn how work done can be calculated in various scenarios. So calculation of work done, the most general formula, the correct formula, always correct formula is this one. Work done is integration of F dot dr when particle is going from point 1 to point 2. This formula always holds. Now, in different scenarios, we can calculate the work done. And first was the case of a constant force. The force is a constant. So when the force is a constant, we have derived the formula to be F into, if displacement is R, then F into R into cos theta. That was the work done. And a very simple example of this is the falling body, or even we can take a projectile motion. Suppose you have thrown a particle from this point and it is undergoing projectile motion and it is reaching point 2. So at each and every instant, the gravitational force is constant, that is mg. So work done by gravity, since I just need the height difference, इन दोनों पॉइंट के बीच का हाइट डिफरेंस कितना है, मींस फोर्स के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है. फोर्स वाज डाउनवर्ड्स, पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, but force was always downwards. And if this displacement was h, I can write the displacement was h in the downward direction. So work done by gravity was mg into h. mg नीचे लग रहा था और displacement h भी downwards. So this makes work done by gravity as mgh. If h is downwards, work done by gravity is mgh. But usually what students take means h is taken the height from the bottom. So here if particle is going down, you can use this formula. If particle is going down, net motion is downwards. In mgh, if particle is going going in the upward direction, if particle is moving in the upward direction, then you can use minus mgh. Because see, the second case, mg नीचे के direction में है, but particle यहाँ से point 1 से point 2 गया. So it has displaced by an amount of h. So because mg and h are in opposite direction, we'll use f minus mgh. तो फॉर्मूला हमेशा बेसिक वाला याद रखना है, बाकी सब उससे कैलकुलेट कर सकते हैं. So this was work done by gravity. Second case, we can take a normal force. So normal force, very rare that normal force does work. So in a simple case like a block is just kept or is moving, and normal force is acting upwards, but it is not moving due to normal force. So in simple cases, normal force, here the work done by normal force will be 0. Why? Because displacement is not in the same direction as the normal force. Displacement is perpendicular to the normal force. Suppose due to this external force F, the object has displaced by an amount of d.
In that case, work done by downward force becomes 0. Now, for tension again, tension can either do work or the work done by tension can be 0. It depends on the displacement of the object. It depends on the displacement of the object. Now, if we talk about work done by spring force, work done by spring force. So let us say एक सिंपल सा सिस्टम लेते हैं. एक ब्लॉक है जिसमें स्प्रिंग अटैच्ड है एंड अभी के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है. Means it is at natural length. X is the displacement और अभी ये natural length पे. This is L0, that is the natural length. जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो कोई भी एक्सटेंशन नहीं है यहाँ पे. बट सपोज मैंने थोड़ा फोर्स लगाना स्टार्ट किया. थोड़ा फोर्स, मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? If I want to move the block very slowly, then मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना स्प्रिंग लगा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द एक्सटेंशन इज x, तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे स्प्रिंग को एक्सटेंड करने के लिए. तो नेचुरल लेंथ से जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है दैट इज x. स्प्रिंग का विडी बनाए, so I want to move it very slowly. इतना स्लोली कि कोई काइनेटिक एनर्जी गेन ना कर पाए, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी ना आए इसमें. there is no kinetic energy. So spring is extended slowly. Spring is extended slowly such that there is no gain in kinetic energy. The reason for this will be understanding later in work energy theorem. हम चाहते हैं कि एनर्जी कहीं और वेस्ट ना हो. जितनी एनर्जी जा रही है वो स्प्रिंग को एक्सटेंड करने में लगे. Spring is extended slowly such that there is no gain in kinetic energy. No gain in kinetic energy. So बहुत ही slowly स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं. So स्प्रिंग फोर्स लगाएगा पीछे और डायरेक्शन के साथ देखें तो ये फोर्स लगाएगा इक्वल टू kx. So जो फोर्स है वो x पे डिपेंड कर रहा है. तो लेट अस से बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं. लेट अस से स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहा है. So if I calculate work done by external agent, or if you want to first calculate work done by spring, this is work done by spring. तो स्प्रिंग का जो वर्क है, फोर्स कितना लग रहा है kx पीछे के डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आगे के डायरेक्शन में हो रहा है. So that's why I'll write minus kx dx. That is work done in this extending the spring from x to dx. This is work done by spring when extension is from पहले लेंथ था x, अब लेंथ है x प्लस dx. तो लेंथ बढ़ गई है. लेंथ जब बढ़ रही है तो स्प्रिंग नेगेटिव वर्क कर रहा है. टोटल वर्क निकालना चाहते हैं अगर तो वी कैन जस्ट इंटीग्रेट दिस. dws is equal to minus kx dx. इंटीग्रेट दिस. लेट अस एक्सटेंशन हो रहा है x1 से लेकर x2 तक. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा minus k by 2 x2 square minus x1 square. x2 square minus x1 square. This is work done by spring.
सो जब हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। ओके, अच्छा, इस फॉर्मूले में ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि एक्सटेंड हुआ या कंप्रेस हुआ। अगर एक्सटेंड होगा तो x2 x1 से ज्यादा होगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग अपने आप नेगेटिव होगा। अगर कंप्रेस होगा तो x2 x1 से कम आएगा। इन दैट केस नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव और वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव आ जाएगा। सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस। तो ये फॉर्मूला जो है हमेशा वैलिड है। अगर धीरे धीरे मूव नहीं करा रहे तो भी वैलिड रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स हमेशा एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग का फोर्स जो है एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव। You can write it as minus k by 2 x2 square minus x1 square. Some students like to remember this in this form. Work done by spring is k x1 square by 2 minus k x2 square by 2. ओके, सो ध्यान रखना यहाँ पे x1 से x2 जा रहे हैं, x1 से x2 जा रहे हैं। अगेन अगर x1 ज्यादा हुआ मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, दैट मींस वर्क डन बाय स्प्रिंग विल कम नेगेटिव। You can use any of, remember any of the formulas. x1 से x2 तक ले जा रहे हैं, वहां के x1 स्क्वायर बाय 2 माइनस के x2 स्क्वायर बाय 2। Okay, note this down, starting from here. Work done by gravity mgh, अगर पॉजिटिव नीचे जा रहा है तो mgh, ऊपर जाएगा तो माइनस mgh। So I hope you have noted this. So work done by spring is kx1 square by 2 minus kx2 square by 2 when spring is extending from x1 to x2. ध्यान रखना है, this is work done by spring, work done by spring, not work done by external agent, वो different है। अच्छा, force which is always perpendicular to displacement does zero work, and one example of this is magnetic field or force due to magnetic field. This will be starting in 12th standard. Sorry, I'll just introduce an example here. Force due to magnetic field, it is always perpendicular to the moving charge. Note this down just for knowledge. Okay, if you have noted, then we'll do some questions based on this, but let us first, after this, understand a term which you already know, that is known as a type of energy, that is known as kinetic energy. Kinetic energy. So kinetic energy is an energy which is associated with a system due to its state of motion. Due to its state of motion, और हम simply define करते हैं kinetic energy of a particle, kinetic energy of a simple particle of mass m, और speed इसका v है, so we can write kinetic energy is equal to half m v square. So kinetic energy is simply just a function of speed, nothing else. Kinetic energy is a function of speed. अच्छा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सी v डॉट v को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, sorry, you can write this as mod of a plus mod of b into cos of 0 into cos of 0. Cos of 0 is 1, mod of v will be v, so this will just give you v square. तो v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सिंपली v डॉट v। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे so you can simply write it half m v vector dot v vector. So velocity का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो v स्क्वायर आ जाएगा। This is for a one particle system, for a single particle system or one particle system. If we have a multi-particle system, तो individual kinetic energy add कर देते हैं। Multi-particle system,
लाइक एक सिस्टम है और उसमें एक पार्टिकल इधर जा रहा है v1 से m1 मास का, दूसरा पार्टिकल m2 मास का v2 से इधर जा रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करता है। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं इज अ सम ऑफ इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज, दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, जितने पार्टिकल है उतना लिख सकते हैं। So this in short can be written as half of mi vi का square, I goes from 1 to nth particle। अगर n पार्टिकल सिस्टम है नहीं तो सिर्फ I भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इस नोटेशन का मतलब है कि सारे काइनेटिक एनर्जीज इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं लाइक अ स्केलर। We're just starting up the all the kinetic energy। So kinetic energy is pretty easy to understand। I'll do some more analysis on this। अब डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है तो और चीजें ला सकते हैं इसमें। So अच्छा, kinetic energy is half mv square। Let us differentiate kinetic energy with respect to time। So dk by dt that will give you half of, अच्छा मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर निकाल सकते हैं, then d of v square by dt। m by 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले सकते हैं। So इसको हम लिख सकते हैं m by 2, इसको चेन रूल लगाना पड़ेगा। So d of v square by dv into dv by dt, ये चेन रूल लगा दिया यहाँ पे, बिकॉज v स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वी कैन ओनली डिफरेंशिएट v स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू v। सो v स्क्वायर को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2v आ जाएगा। सो m by 2 into 2v, और dv by dt को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। dv by dt इज एक्सेलरेशन। सो यहाँ से आ जाएगा dk by dt इज इक्वल टू mv into dv by dt, है ना। एक्सेलरेशन को dv by dt लिख सकते हैं, एंड सी m into dv by dt इसको ऐसे लिख सकते हैं m into dv by dt into v, and m into dv by dt is your force and v is your velocity or speed। But suppose you have a particle का अगर speed इधर है, तो ये dv by dt भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे ft लिखते हैं। ft means tangential force। ft is your m into at, m into at। जैसे अगर फोर्स कोई एंगल बना रहा है, so you'll only take the tangential force, not all the force, only the tangential वाला force, the velocity के along है, where at will be this dv by dt, at will be dv by dt। ओके, कहने का मतलब है अगर फोर्स, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है और हमारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो हमें सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स की बात करनी है, ये वाला फोर्स नहीं लेना है। इस ft की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है at, एंड दैट कैन बी रिटन एज dv by dt। सो ft into v लिख सकते हैं इसको। ओके, अच्छा यहाँ से सी यू कैन सी ft को लिख सकते हैं f cos थीटा, यहाँ पे पुट किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया f v cos थीटा, f v cos theta, that is f dot v, this is f dot v। अच्छा, अगर v को लिख दिया dr by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन,
v is dr by dt, so हम यहाँ से लिख सकते हैं dk by dt equals to f dot dr by dt equals to dk। अच्छा, अभी ज्यादा वरी नहीं करना है, इसको अभी अंडरस्टैंड करना है मैथमेटिक्स क्या क्या कौन कौन से रिजल्ट ला सकता है। बाद में जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, then you'll understand कि ये क्यों लिख रहे हैं ऐसे। अभी के लिए only velocity which is along the displacement, velocity is along the displacement, and acceleration which is along the velocity, then only that acceleration can be related to kinetic energy. So dk को लिख सकते हैं f dot dr, मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। इसका एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आता है बाद में, विल सी। अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दिस, dk by dt is force into tangential velocity, एंड dk को लिख सकते हैं f dot dr। मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है मीन्स कोई फोर्स वर्क कर रहा है, सो वर्क की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ सकता है। दिस इज अ वेरी गुड थ्योरम जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलेंगे बाद में। अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। So yeah, note down these results. Kinetic energy, yeah, So tangential force is along the velocity vector, right? हाँ, tangential force is along the velocity vector, velocity इसी डायरेक्शन में है, और इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर होता है, और हमें पता है कि कोई वर्क नहीं करता क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो। सो हमने ये डिराइव किया कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू f डॉट dr, and from here we'll get a very interesting result. I hope everyone has noted it down. सर एक मिनट, लास्ट पार्ट नोट करना है। Okay. सर डन। Just see, we have defined work done. We have defined our work done as integration of f dot dr, and this is when particle is going from point 1 to point 2. Particle is going from point 1 to point 2. कोई फोर्स लग रहा है इस पे, इट इज इस एंगल पे, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो इस डायरेक्शन में है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से ही एक्सेलरेशन आएगा, इसकी वजह से ही वेलोसिटी आएगा, and that will be responsible for change in position, displacement dr। तो dr वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, वो सारे टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन में होगा। अच्छा, f डॉट dr को अभी हमने क्या लिखा, f डॉट dr में दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक f t dr और एक f सेंट्रीपिटल वाला dr। सेंट्रीपिटल वाला कोई भी वर्क नहीं करेगा, so we can write this as equal to ft dr, और ये तो डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं, अभी सॉल्व किया ये एफ टी डी आर को, एफ डॉट डी आर को सीधे डी के लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज जस्ट डी के फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। अच्छा, डी के को इंटीग्रेट करेंगे तो के आ जाएगा, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल टू k2 माइनस k1, और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस पॉइंट को इनिशियल और फाइनल लिख देते हैं, आई एंड एफ। तो ये है इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, initial point, final point, I and F. So we'll write work done on a body is equal to change in kinetic energy. Work done on a body is equal to change in kinetic energy.
So we'll write here in the form of a statement, and this is a very useful result. बहुत बड़े रिजल्ट को बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया, and that is the beauty of physics. He not only in mechanics and many different other parts of physics, we can write very big things in very small equations, and they mean a lot of things. And कभी-कभी ऐसा होता है कि जितना हम मतलब हमने इक्वेशन को बहुत ही सिंपली डिराइव किया, बहुत ही सिंपल वे में डिराइव किया, बट जितनी मेहनत हमने इक्वेशन बनाने में या इक्वेशन डिराइव करने में लगाया, उससे कहीं ज्यादा आउटपुट द इक्वेशन कैन गेट. And this is one of those equations, and in very simple words it says that the work done on a particle by the resultant force मुझे कोई इंडिविजुअल फोर्सेस के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स के बारे में वरी करना है. The work done on the particle by the resultant force is equal to the change in its kinetic energy, is equal to the change in its kinetic energy. बहुत ही simple सा equation है, simple सा relation है, and we have derived it from the basics, and this whole thing is called work energy theorem. This is called work energy theorem. Means जितना भी वर्क हम किसी सिस्टम पे कर रहे हैं वो जाता है सिस्टम की kinetic energy. This is called the work energy theorem. Okay. अच्छा, इस इक्वेशन को लिखने के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, एंड वी आर गोइंग टू फर्स्ट इन्वेस्टिगेट द एंड क्वेश्चंस हम करेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे इसमें, बट इन बेसिक्स को नहीं भूलना है, कहाँ से डिराइव है उनको नहीं भूलना है. नाउ सी, वर्क डन को हम अपने ओरिजिनल फॉर्मूला से ऐसे लिख सकते हैं F डॉट dr. अच्छा, मैंने बोल दिया कि F नेट फोर्स है. F नेट फोर्स है मीन्स ये कई फोर्सेस से मिलके बना हो सकता है, जैसे F1, F2, F3 सारे फोर्सेस से मिलके बना हो सकते हैं. So we can write it like this: F1 dot dr plus integration of F2 dot dr plus integration of F3 dot dr. बीच में एक स्टेप है जो मैं खा गया, but you can understand क्योंकि ऐड है तो simply d और dr सब में हो जाएगा. So individual forces से जो वर्क डन है, that is this F total work. This is total work. Total work is F1 फोर्स ने कितना वर्क किया, that will be W1. F2 फोर्स ने कितना वर्क किया, that will be W2. F3 फोर्स ने कितना वर्क किया, that will be W3. So this is what W is the net work done. W is the net work done. So W1 W2 क्या हो सकता है? Suppose W1 हो सकता है इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी, W2 हो सकता है वर्क डन बाय स्प्रिंग, W3 हो सकता है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, W4 हो सकता है वर्क डन बाय कोई पर्सन है जो वर्क कर रहा है इस पे, कोई पर्सन है जो वर्क कर रहा है, तो सबका वर्क मिला के that will be giving you change in kinetic energy. This is what work energy theorem says simply in the simple manner. The sum of work done by all the forces acting on the particle is equal to change in kinetic energy. Okay, this net work done, that is the sum of all the work done, gives you the change in kinetic energy. Write it again: the sum of all work done, on a particle or on a system, is equal to change in its kinetic energy. Is equal to change in its kinetic energy. बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, बहुत यूजेस है इसके. हर चैप्टर में यूज आएगा इसका, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें ये यूज नहीं होता. ऑफ कोर्स न्यूटन्स लॉ एंड काइनेमेटिक्स भी ऐसे चैप्टर्स है जिनका हर चैप्टर में यूज आने वाले. The sum of all work done on a system is equal to change in its kinetic energy.
and that is the work energy theorem. अच्छा एक और रिलेशन है, we'll just go through it quickly. पावर को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, dw by dt. so dw by dt, dw क्या लिख सकते हैं, f dot dr, f dot dr. तो या तो f को f by dt लिखना is not very useful, so I'll write f dot dr by dt. That will give you f into velocity. So power is dot product of force and velocity. Power is dot product of force and velocity. Force and velocity. That's it. That's the definition of power. और ये definition of power change नहीं होने वाला किसी भी केस के लिए. अच्छा, power is rate of work done. That is the basic definition. In kinetics, in kinematics, in our mechanics, we'll be using this relation. Power is equal to force into velocity. Force F dot V. That will be FV cos theta. And this relation you can remember. Power is rate of work done, or F dot V. That is FV cos theta. So everything is we are deriving it from simple differentiation integration करके ही relate कर पा रहे हैं. Okay, note this down. फिर इसको understand करेंगे कुछ numericals करके. And then you'll understand the beauty of this small statement, small equation. Achha, in this question, try not to use the first three equations of motion. Do it just by work energy theorem. Try not to use the concept of previous chapters. And believe me, this concept, using the concept of work energy, this question can be done easier as compared to, this question can be done easily as compared to the concept of motion and the three equations of motion. So in this question, we'll be talking about the two states of the system. So in the first state, the ball is 5 meters above the ground. Ball is 5 meters above the ground. Solving this question is very easy, but we have to be methodical. We have to be clear about the methods, because just as the things complicated होती हैं, फिर वैसा issue आता है अगर method use नहीं करते हैं तो. It's like Newton's law में free body diagram बनाना is very important, because that's the method of solving the issue question. Simple problem तो बहुत easily हो जाता है, but जैसे थोड़ा tough होता है तो we get confused about how to do it. So basic method here is you have to define two states. You can call it the initial state and the final state, or you can call it the state 1 and state 2. So I'll call this initial state. So a ball is dropped. Ball is dropped means initial kinetic energy. Drop means velocity 0 होगा. So half mvi square. Initial kinetic energy is 0. And this is the final kinetic energy. Let us say that finally it is reaching here. Then the kinetic energy is kf. Okay. Now we can't find kinetic energy just before hitting the ground without finding the work done by gravity. So work done by gravity ke liye I have to draw the forces on it. That is mg. Aditi, tell me the amount of work done by the gravitational force. Will it be plus mgh or minus mgh? सर प्लस mg नहीं, एक मिनट, वर्क डन बाय ग्रेविटी तो सर प्लस mgh होगा. प्लस mgh, बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नीचे ही जा रहा है. हाँ सर. तो mgh we can calculate the value, that is 0.5 into 10 into 5. हाँ, 25 जूल. 25 joules. इसके बाद सी, इस ऑब्जेक्ट पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं. इन शॉर्ट आई विल जस्ट राइट इट एज WET, वर्क एनर्जी थ्योरम.
So work done by gravity, that will be equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. From here, I get the final kinetic energy as how much? This is 0. So final kinetic energy will be 25. 25 joules. Very good. हाँ. और फिर यहाँ से हम फिर बॉल की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं. So that way we are going to solve. We are going to define states IF like this. You can also write 1 and 2. अभी के लिए हम potential energy term use ही नहीं कर रहे. So don't get confused about potential energy. अभी सिर्फ work done है kinetic energy. Nothing else. Potential energy आज हम पढ़ेंगे ही नहीं. वो उसको अगले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं. So without using the potential energy, we can use this theorem and figure our question. Okay, let us do another question. Suppose from the ground, you're throwing a ball above with kinetic energy 100 joules. With kinetic energy 100 joules. So mass of ball is given. That is 2 kg. Find potential energy. No, we'll not talk about potential energy. Sorry. Find kinetic energy at the highest point. Kinetic energy at the highest point. Then find work done by gravity when ball reaches the highest point. And third, find kinetic energy when ball reaches half of the maximum height. And before that, we can add another question. Find the height at which kinetic energy is half of maximum. Kinetic energy is half of maximum. Solve this question. So in this case, let us say the final point is this point. Let me call this point F. So, जब ball highest point पे होगा तो kinetic energy will be, it will be equal to 0, of course, because at highest point speed is 0. So at highest point kinetic energy is 0. Then if you want to find the work done, you can write this as work done will be equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. So work done कौन कर रहा है? Gravity कर रहा है. So work done by gravity is, because there is no other forces, so only gravitational force का work done होगा. That will be 0 minus 100 joules, and work done by gravity will be minus 100 joules. Work done by gravity is minus 100 joules. Then find the height at which kinetic energy is half the maximum. So let us say at some point, let me call this as some point 3, third point.
So you have to find the point at which kinetic energy is half of the maximum kinetic energy. So we can write again that work done by gravitational force is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. यहाँ पे final क्या हो जाएगा? Kinetic energy at 3. And work done by gravity. So if suppose this height is h, then work done by gravity will be mg. See, mg नीचे लग रहा है, h ऊपर की तरफ है. So I can write m minus mgh. K3 will be ki by 2. From here you will get the value of h. Find the value of h. And then find the value of K3. That's kinetic energy when ball reaches half of the maximum height. So here, what is the value of h you are getting? Little bit. What is the value of h? Anyone? 2.5. 2.5. mg हो जाएगा 20 and 40. Yeah, h will be 2.5. Now, find kinetic energy when ball reaches half of the maximum height. So either you can first calculate the maximum height. Let me call this as capital H. So work done by gravity, when it is going from here, this should be minus mg into capital H. From here you can calculate the maximum height. That will be 5 meter. And you know that it is at 2.5 meter already. So K3 find out करना है. That will be K initial kinetic energy by 2. It will be 50 joules only. That will be 50 joules only. Okay, next question is like this. A ball is thrown from the top of a cliff, which is 50 meter high, and at an unknown angle with speed 50 meter per second. You have to find the speed of the ball when it reaches the ground. Find speed of the ball when it reaches the ground. The angle is not known. So here, work energy theorem gives you the freedom to calculate the kinetic energies without worrying about the direction of the speed. If I take this point as 1 and this point as 2, I can write there is only one force that is doing the work, that is gravity. So work done by gravity is final kinetic energy minus initial kinetic energy. So see, gravity का जो force है नीचे लग रहा है, and net displacement भी नीचे की direction में हो रहा है. So work done by gravity will be positive, mg into 50. That is equal to final kinetic energy. Let me write it as half mass into final kinetic energy by square, that is v2 by square, minus half m into initial by square. Initial speed is 50. So m will get cancelled out from this equation. What's the value of v2 that you are getting? 10 into sir, v naught square is equal to 3500. 500 हो जाएगा, and this will be 2500 by 2, 1250. So 1750. सर गलत आ रहा है मेरा.
Bharvi, what's the answer that you're getting? गलत आ रहा है, ये नहीं है. Okay. This multiplied by 2 भी आएगा ना यहाँ पे 3500. That will give you 10 root 35. 3500 का रूट आ रहा है क्या? ना आ रहा है? Sir. Okay. So root 35 will be approximately 5.9 or 5.8. So 58-59 meter per second आ जाएगा. In the same way, try question number 4. So this is how work energy theorem is very useful. It does not care about the direction of the initial speed. Suppose you have a inclined plane and a ball is initially at point A and is rolling down the inclined plane. It is just sliding down the inclined plane with speed, let us say 5 meter per second. And this height is 5 meter again. Find the speed of the ball when it reaches point B. Find speed of ball when it reaches point B. This surface is frictionless. First do question number 4, then try question number 5. Ye wala, of course, this is fixed to the ground, but the ball is now going down the incline. And the speed of the ball when it reaches point B. So, so tell me the velocity in the or speed in the second case, question number 4. Aditi, fourth case में कितना आंसर आ रहा है? Oh, this is an easy question, taking a lot of time. Same है, mg force नीचे लग रहा है, there is no other force on it. So work done by gravity will be again mg into 50, because ball is going downwards. That will be half m into v2 square minus half m into 50 square. Same calculation, everything is same. So final velocity will be again 10 root of 35 meter per second. हाँ सर मेरा ये आया था बट ना I thought it was wrong. No, it always the concept is right, so the answer is right. Intuitively लगता है कि ये wrong है, but this is the right answer. Okay, Okay, so sir. what about in this case? Let us solve this right now. इस पे दो ही फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा नीचे और दूसरा लगेगा नॉर्मल फोर्स. So work done में total work आएगा, I can write kinetic energy at B minus kinetic energy at A. Work done लिखेंगे work done by gravity plus work done by normal force. अच्छा Aditi, tell me what is work done by normal force?
What will be the value of work done by normal force? Sir, it will be 0. 0. And work done by gravity? Work done by gravity will be sir, Force है mg mg और displacement कितना है? 5 meter. 5 meter. So force की direction में जो displacement है, that is 5 meter. And nothing else we need to worry about. Sir. Final kinetic energy we need to calculate. And initial kinetic energy we already know. M into VA कितना था? 5 square. Do the calculation, find the value of VB. कितना आएगा VB? Five root 5. 5 root 5 meter per second. That will be the answer. So suppose we have the next question. But in the next question, the block on which the ball is sliding is like this. Again, it's go down the incline throw किया गया है. The speed is 5 meter per second. This is point A, this is point B. The vertical height ka difference between point A and point B is 5 meter. So find speed of ball when it reaches point B. Surface is frictionless. Surface is frictionless. Similarly, calculate the speed of the ball when it reaches point B in these two cases. Remember, you have to consider all of the work done. All of the work consider करने के लिए सारे forces consider करने पड़ेंगे. And this part is fixed, so no need to worry about that this is doing any work by moving. Tell me the velocity in this case, question number 6. 5 root 5. 5 root 5. और last case में question number 7 में 5 root 5. 5 root 5. Yeah. So here, because there are only two forces, normal force or gravity, so we don't need to worry about anything else. Normal force का work done हमेशा ही 0 होगा, and gravity will always only do work जब ये नीचे के direction में move कर रहा है. Then only gravity will do work. In no other case gravity will be doing work. For horizontal motion के लिए gravity responsible है, but it is not doing any work there. Okay. Moving on to the next case, we'll talk about how to calculate work done during friction. So, friction work, let us calculate. So, first question, block is sliding, there is friction, and let us say it has displaced by an amount of
5 meter. Coefficient of friction is given, that is 0.1. Mass of this block is given, that is 2 kg. And you have caused displacement by applying a force. Find work done by friction. Find work done by friction. Following cases you have to find work done by friction only. Some force is causing the displacement, you don't need to worry about that. That force is not affecting the normal force. सर फर्स्ट क्वेश्चन में 0.1 क्या है? Coefficient of friction, mu. Mu is coefficient of friction. अगर सिर्फ coefficient of friction दिया हो तो coefficient of static friction is equal to coefficient of kinetic friction is equal to mu. So in the first case, the work done by friction will be force of friction into the displacement. So friction, here the work done by friction, you can see the displacement is in the forward direction, but the force of friction will be in the backward direction. That is mu times n. So minus F into L. What will be F here? That will be mu times the normal force. Normal force here is mg. So minus mu mg L. Mu is 0.1. Mg will be 20. L is 5. So work done will be minus 10 joules. Arjun, what is the answer that you are getting? Nirvit, what is the answer you are getting? minus 10 joules. Minus 10 joule. And second वाला भी हो गया क्या? हाँ. कितना आ रहा है? minus 10 joules. Minus 10 joules. Okay. See यहाँ पे work done by friction will be minus frictional force into the length. So frictional force क्या हो जाएगा again here? If you draw the FPD, that will be mu times the normal force. Normal force क्या हो जाएगा यहाँ पे? mg cos theta. If this angle is theta, we'll write normal force at as mg cos theta. So this will be minus mu mg cos theta into L. Into L. और अगर sorry इस लेंथ को अगर d लिख लेते हैं तो it will be mu mg into t. Okay, so अगर d cos theta, अगर ये लेंथ d है, so d cos theta क्या हो जाएगा? ये horizontal length हो जाएगा. So I can write this as minus mu mg L. So अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा 5/2, that is 2.5 meter. So I can write this as minus mu 0.2, mg is 20 and L will be 2.5. So minus 10 joules is correct. And third wala, was anybody able to figure out? No, sir. minus mu mgl.
minus mu mgl, that is correct. Can you tell me how? Friction mu into normal force होगा normal mg. Normal. So friction mu into mg and work done by friction is friction into displacement. So नॉर्मल फोर्स mg तो नहीं होगा अभी. नॉर्मल फोर्स तो हर एंगल पे चेंज होगा ना, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे. सी हियर, सपोज आई टेक अ कर्वेचर. यहाँ पे कोई कर्वेचर लेते हैं एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ एफ पी डी. लेट्स से अभी दिस इज दी, इस कर्वेचर को ले लिया, जूम इन कर रहे हैं बहुत बड़ा, इस पोर्शन पे एफ बी डी बना रहे हैं. तो बहुत ही ज्यादा जूम इन करेंगे तो इट विल लुक लाइक अ इंक्लाइंड प्लेन. लेट अस से अभी के लिए जो एंगल बन रहा है इंक्लाइंड प्लेन से, दैट इज थीटा. तो एफ बी डी बनाएंगे तो नॉर्मल फोर्स इधर आएगा, एम जी नीचे आएगा. तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एम जी कॉस थीटा इधर लग जाएगा और एम जी साइन थीटा इधर लग जाएगा. सो एम जी साइन थीटा इधर है तो मतलब ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है. सो फ्रिक्शन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू टाइम्स द नॉर्मल फोर्स. दैट विल बी इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, बिकॉज स्लाइड करेगा तभी बी तक पहुंच पाएगा. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाले, दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन. यहां से यहां तक पहुंच रहे हैं, यहां से यहां तक पहुंच रहे हैं. लेट मी कॉल दिस एज, दिस डिस्टेंस एज डी डी. तो यहां से लेकर यहां तक पहुंच रहे हैं, तो वर्क डन विल बी माइनस एफ इंटू डी डी. जैसे डी एक्स डी वाई वैसे डी डी लिखा हुआ है. सो एफ विल बी इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी डी. अच्छा, इस डी डी के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, दिस ट्रायंगल. इफ आई जूम इन, दिस ट्रायंगल विल लुक लाइक दिस. तो जो हमारा ब्लॉक डिस्प्लेस कर रहा है, दैट इज दिस डी डी. And if this angle is theta for this instant, this will be dd cos theta. Let me call this as dx, and this is dd sin theta. Let me call this as dy. So L लिख देते हैं, शायद dd में confusion हो रहा हो. In that case, let me call this as dl. This will be dl sin theta, and this will be dl cos theta. Now see, जो हमारा dl cos theta है उसको हम dx लिख सकते हैं. What is dl cos theta? That is dx. So work done, जो small work done है for this small displacement, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने हैं पार्टिकल को, यहाँ से यहाँ तक, बहुत ही small displacement के लिए, that is minus mu mg dx. That is a work done by friction. So total work done will be integration of this. So work done by friction will only depend upon the displacement which is horizontal. So ऐसे हर छोटे छोटे triangles के लिए I can keep adding dx. ये छोटे छोटे dx add करते जाएंगे, what you will get? You will get the horizontal. Horizontal में कितना displacement हुआ? Only it depends on that. So this work done by friction equals to minus mu mg. Horizontal displacement को लेटर से यहाँ पे L लिखा हुआ है, so minus mu mg L. Where what is L? L is the horizontal displacement. Horizontal displacement on rough block. So जो फ्रिक्शन का वर्क डन होता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है एंड नथिंग एल्स. अच्छा, ऐसे ही इसका वर्क डन भी निकाल सकते हैं, ग्रेविटी का वर्क डन भी निकाल सकते हैं इसी कंसेप्ट से. यू कैन सी वर्क डन बाय ग्रेविटी. अगर लिखना चाहे डी डब्ल्यू ऑफ जी, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी एम जी इंटू डी वाई.
mg into dy, or if you want to write more basic, so that is mg, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dl के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dl के डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, दैट इज नॉट mg, दैट इज mg into sin थीटा. सो mg sin थीटा into dl हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी. सो mg तो सेम ही रहेगा, एंड dl sin थीटा, इफ यू राइट dl sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, दैट इज dy. टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए आई कैन जस्ट इंटीग्रेट दिस, mg तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. From here we get the work done by gravity is mg into y. So work done by gravity it only depends on the vertical motion, only on the vertical displacement, and work done by friction it only depends on the horizontal motion. So this is how we should derive this relation. So friction का work done हमेशा my horizontal displacement पे depend करेगा. अभी रोलिंग की बात नहीं कर रहे, रोलिंग के केस में केस डिफरेंट होगा, वो सब हम रोटेशनल में पढ़ेंगे. वे एक नॉर्मल केस पढ़ रहे हैं, दैट इज फॉर ट्रांसलेशन मोशन. ठीक है, नोट दिस डाउन एंड रिमेंबर दिस रिजल्ट. हर बार ये डिराइव करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा इन एग्जाम. सो फ्रिक्शन का जो वर्क है दैट डिपेंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल मोशन. Noted? Can you send the answer key to the lean mode exercise in Newton's law of motion? That is given at the bottom of the, on the last page you'll find the answer. Okay, sir. Yeah. And use the new version now, because I'll send you the latest version in that even 2021 years, so this year question have also been added. Okay, sir. Okay, let us do a question on based on what we have learned. So suppose a block is sliding down this from point A to B. This height is 5 meters. This is 10 meters. And a block of mass, unknown mass, let us say mass is m. Coefficient of friction between the block and the plane is 0.1. Then find speed of block when it reaches point B. Find speed of block when it reaches point B. Let me give this as 0.4. Find speed of the block when it reaches point B. Initially, the block is at rest. Okay, velocity at A is 0. We have to find velocity at B. So use the work energy theorem. Total work done is equal to change in kinetic energy. Work done here, there are 3 forces. That is gravity, friction, and normal force. Can calculate each work individually and then find the velocity. Bharvi, tell me the work done by gravity here. What should I write? M into 10 into 5. Yeah. And work done by friction? Minus 0.4 into M into J into 10. Yeah, minus mu mgl. That's correct. And work done by normal force? 0. 0. That will be equal to half m vb square. And luckily we are getting that all of the m are getting cancelled out. 5 minus
4 half VP square. What's the value of VP here? Okay, it should be 50 minus 40. What's the value of VP? Root 6. Root. How much? Root of? Root 6. Root 6. 2 root 6. 2 root 6. 2 root 5. 2 root 5. That would be right answer. Yeah. 2 root 5 meters per second. So this was the question in which several words were involved because 3 forces there and we calculated individual word. We'll be practicing more questions like this. In SC Verma exercise, you can try up to question number, I'll say 25 तक तो हो जाएगा easily. Yeah, try up to question number 25 in SC Verma. All right, that would be it for today. Thank you.